Usually doesn't happen, but okay, let me just welcome you all today to this amazing workshop we have today. Welcome Akansha. Hi Anahita from Kurg, Aruna, Dipanshi, Deepika, Rupali. We have such beautiful ladies on board today. Shilpi, Shweta Kumari. Firstly, let's have a round of applause for all of you for joining this workshop today, because if you are here, you've taken the first step towards working. Yeah, I can speak English, Hindi both. So let's hear it from the audience. What language do you guys prefer to listen to this workshop in? Whether it's English, Hindi, or you comfortable with English. मैं दोनों भाषा बोल सकती हूँ. I can speak some bit of Punjabi also. So Dipanshi says both. Anahita says no, Hindi मैम ठीक है, हिंदी में बात करेंगे. Kavita says both. ठीक है, बट देर आर स्पेसिफिक पीपल जिनको सिर्फ हिंदी में सुनना है, तो हम हिंदी में ही बात करेंगे आज. लवली. ऑल राइट, ऑल राइट. थैंक यू. यस यस अनायता, विल स्पीक इन हिंदी. हिंदी में बात करेंगे. मैं कोशिश करूंगी. थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आ जाती है हमेशा जबान पे, बट हिंदी में ही बात करेंगे. हिंदी वुड बी बेटर फॉर देम टू, ऑफ कोर्स, हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. Yes, Rupali, thank you so much. So, guys, so my question to all of you is, abhi वैसे भी दिवाली टाइम आने वाला है, and we are going to get busier than usual, but ऐसा होता है ना हम सबके साथ, that as women हम लोग हमेशा अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, राइट? एंड हम लोग बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं, एंड जिम कर चुके हैं, डाइट कर चुके हैं, सप्लीमेंट्स ले चुके हैं, और कितना कुछ करने के बावजूद भी हमेशा ये होता है कि अब मैं क्या करूं, वो बेली फैट कैसे लूज करूं, और हमेशा मेरे को थकावट महसूस होती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, एंड आई लैक द मोटिवेशन टू डू एनीथिंग. कभी ऑफिस का काम है, कभी बच्चों को देखना है, घर का काम है. दिस सो मच टू डू एज विमेन. इफ यू कनेक्ट विथ मी, इफ यू थिंक दैट यू टोटली रेजोनेट, आप कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे से कि yes, if that is you, and if you feel that you never have the time for yourself, आपके पास अपने लिए कभी भी टाइम नहीं होता है. हमेशा ये होता है कि अच्छा मैं अपने बच्चों को देख लूं, मैं अपने हस्बैंड को प्रायोरिटाइज कर लूं, बट वी नेवर प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ. हम अपने ऊपर कभी काम नहीं कर पाते हैं, right? So if you feel that that is you, then please type comment in the comment box, say yes to me, so that I know that you're able to resonate with me. आप मेरे साथ आज इस वर्कशॉप में समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. So pardon my Hindi a bit, because I'm very comfortable with English, but थोड़ा हिंदी, of course, I mean I'm there. So let's hear it from all of you. Yes, Dipanshi says yes, Kavita says yes, Shilpi says yes. Lovely, lovely. होता है ना, हम लोग हमेशा whenever we look at ourselves in the mirror, we say अरे यार मेरे face पे तो glow ही नहीं है, मेरे पास exercise करने का time नहीं रहता है, right? I have this facial hair, especially people who have PCOD and irregular menstrual cycles. They'll say I have facial hair, I have this, I have these issues, and what is the last option left with me? So we all face that. All right, so lovely, guys. So let me just welcome you all today, and good evening. My name is Anjali. I'm your Sakhi, and I'm your partner in crime today. And I would like to welcome you to this workshop today, where we will master the hormonal imbalance through, with our experts here. I'm 32 years young. I'm a mother of a 2-year-old. I have about 10 years of experience in nutrition, fitness, managing lifestyle conditions. I have helped many women with their PCOD thyroid condition. And let's quickly do an exercise with all of you. Yeah, so do you see the screen? So I want to know my audience today, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप सबको इनमें से क्या-क्या issues हैं. If you have acne, you type 1. If you have painful periods, you type 2. And I hope मेरी आवाज आप लोगों को एकदम clear आ रही है, because I'm on a different device that I'm usually on. So if I'm audible, please give me a fun thumbs up. And from all these issues that you see on the screen, I'll be using both English and Hindi. Can I know कि आपको क्या-क्या issues हैं? Rupali says bloating. All right, Rupali. Rupali says 4 as well.
Everything except 6. Dipanshi says everything except 6. That is cold tolerance. All right. All right, Dipanshi, we are here to help you at Laiqa, and we'll be covering all the topics today, and we'll address them all, and we'll address all your questions and doubts, whatever it takes. So आज हम लोग मिल के इसका हल निकालेंगे. Priyanka says 11 and 14. All right. Irregular periods. All right, let's hear it. सबसे सुनते हैं. प्लीज पार्टिसिपेट करिए. ये वर्कशॉप आपके लिए ही है. एंड बिफोर दिस आपको एक मेरा वीडियो मिला होगा, एंड विच सेड in this workshop we will try to solve all your issues. All right, let's hear it, guys. What about other people? So basically मैं फिर से पूछती हूँ, and I'll repeat this in English, Hindi both. For all those people who have issues, if you have acne, you have painful periods, you have bloating, you can type 1, 2, 7, whatever it is. अगर आपको इनमें से कोई भी इश्यूज हैं, just type Kavita says 10. All right, Kavita says she has mood swings. Sure. So let's hear it from all of you, and let's see what all cities are you guys from. आप कौन से cities से हैं, मुझे बता सकते हैं? So I want to ask you all a question. All right, Sanchi says Meerut. Whom do you think? Kavita says Ujjain. All right, lovely. So I want to ask you all that whom do you think is responsible for all this, for all these issues? Dipanshi says, already she says hormones. Absolutely bang on, Dipanshi. That's absolutely correct. And you know, you've just answered this with a flip of in seconds. So absolutely. So Dipanshi ने जैसे बहुत सही बोला कि हमारे hormones responsible है in सब, whether it's acne, whether it's painful periods or irregular periods, your you're getting hair fall, ये सब issues का कारण है hormones. हमारे hormones क्योंकि imbalance रहते हैं, इस वजह से हमें ये सब issues होते हैं. Let's go to the next slide, please. So essentially what we're trying to say is that your hormones can actually make you dance, right? Because they make you dance and they keep you on your feet. So we have dietitian Adrija with us. She has about 5 years of experience in weight management and nutrition counseling, and she applies the principles of Ayurveda. She's here with us on the screen, and let's welcome her aboard. Welcome, Adrija. How are you doing? Hey, hi. First of all, good evening. I can't hear you. Can you hear me now? Yes. Lovely. Okay, I can hear you now. Welcome aboard, Adrija. Okay, yeah. Thank you so much. First of all, as I was saying, good evening to everyone who has joined and taken a time कि health के regarding, health conscious होने के लिए time निकाल के हमारे साथ join किए हैं ना यहाँ पे. So yeah, definitely I'm excited to share my insights with all of you today, and I'm looking forward to a very interactive session where we all together can learn and grow together. Absolutely, absolutely, Adrija. Thank you so much for joining in today. And girls, Adrija, dietitian Adrija will, be answering all your questions. आपके जो भी सवाल हैं आज diet related, PCOS, hormonal imbalance related, हम आज इनको पकड़ेंगे और सारे अपने सवाल पूछेंगे. Definitely, definitely. So अब कुछ एकदम साफ और एकदम ट्रांसपेरेंट बात करते हैं, ठीक है? नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, एंड मुझे बताओ हाउ वी डिफरेंट फ्रॉम मेन. हम लोग फ्रॉम मेन हम लोग कितने अलग हैं, हम कैसे अलग हैं? नॉट इन दैट सेंस, जिस सेंस में आप लोग सोच रहे हो. So if you look at this photograph, and अगर आप देखोगे बाहुबली मूवी की फोटो है, राइट? एंड when it comes to the man, वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर को यूज करके he ensures that
he's winning the battle. Whereas when it's concerned with this lady, she uses her mind, right? So आपको क्या लगता है हम लोग मर्दों से कैसे अलग हैं? How are we different from men? Let's hear it from all of you. How are we different from men? Strength. Sharon says strength. Sanchi says physical and mental strength. Absolutely. Okay, let's move on to the next slide. So let's move next. So now I'm going to show you, and I'm going to talk about some basic science. बहुत ही basic है ये. So if you look at this is a chart, and ये हम लोग basically testosterone levels की बात कर रहे हैं. So अगर आप देखोगे ये for a young man, it goes up in the morning, right? It's highest when they wake up. So करीबन 7-8 बजे it's at the peak, and it goes down gradually during the day, right? Shilpi says ladies have more emotional, physical, and mental strength. Absolutely, Shilpi, and there's a reason to it, right? So again, I'll repeat this. So it goes up in the morning, it's highest when they wake up, and it gradually comes down, right? So men have a 24-hour hormonal cycle, basically, which means that it has very little to no variation at all. So this is what they face every single day. It doesn't change, right? Month on month, it remains the same. Let's look at now. That's a shocker, and this will shock you. This is like a female hormone cycle, and you see this, all these, the graphs going up and down. And of course, we have various phases. We have the menstrual phase, the ovulation phase, the luteinizing phase, the follicular phase. And if you see that in the ovulation phase, all your hormones, सारे के सारे hormones peak पे हैं. और ये हमारे लिए जरूरी है, right, Adrija? Because आपकी body prepare कर रही है और आपकी womb prepare कर रही है for a baby, and you require all these hormones to be at a peak. But ये होता है ना, when you are actually in your menstrual phase, you feel low and you feel, or you have these pains, you have menstrual pain, you have acne popping up, right? This happens because your hormones are acting up at that point of time. So let's hear it from Adrija. What are these hormones, and let's understand कि इसके imbalance से क्या होता है, right? Kavita, yes, female or emotional, because I mean we have these hormones that act up, and we are made in that way. So let's hear it from Adrija about some science, and then we'll move on to how is that we can help you actually जो imbalance हो रहा है उसको हम होम रेमेडीज से कैसे नेचुरल तरीकों से रिवर्स करें. Yes, definitely, Anjali. So, पहले तो बहुत important है to understand कि what are hormones, right? So, our body has different hormones, and hormones are nothing but are chemicals that coordinate different functions that are happening in your body. चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, डाइजेशन हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, आपके मूड हो, स्लीप हो, each and every function in your body is somehow coordinated and being controlled by hormones, which are nothing but chemicals which are present in your body, right? And of course, जैसे हम लोगों ने इसके previous slide में देखा कि wherein menstrual phase like the cycle है, different hormones का fluctuation हो रहा है. Now I always say that it's very important to understand कि fluctuation क्या है और imbalance क्या है, right? तो impact of अगर मैं imbalance की बात करूँ, imbalance is like going fluctuation is normal, but अगर उसके beyond अगर कुछ हो रहा है, that is your imbalance. And imbalance के बहुत सारे symptoms हो सकते हैं. People might be feeling, आपके mood पे effect हो सकता है, आपके metabolism पे हो सकता है, आपके weight gain पे हो सकता है, hair fall can be an issue. Stress level बढ़ जाता है आपका. तो all these things are definitely because of your hormones, and अगर imbalance है, right? So अगर मैं imbalance की बात करूँ तो it's very important to understand कि hormonal imbalance क्यों हो रहा है, right? तो these are an outcome of key lifestyle disruptions. Definitely अगर हमारे lifestyle में if you have a gut which is not healthy and you are not digesting your food properly, definitely the nutrients that your hormones need will not be available, right? And as a result, जो hormone है आपके body में, that will not function the way it should function properly. Similarly, अगर आपके body में if there is any kind of nutrient deficiency, if there is in your body,
प्रॉपर डाइट आप नहीं ले रहे हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर डेफिशिएंसी है, या इवन अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, इफ देयर इज इवन टॉक्सिसिटी, दैट कैन ऑल्सो लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस। एंड ऑफ कोर्स आपका स्लीप अगर सही नहीं है, स्ट्रेस अगर सही नहीं है, यू आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स आउटसाइड द आउटसाइड वर्ल्ड में, बिकॉज नाउ डेज अगर हम कुछ भी देखें, पैकेट फूड्स आर समथिंग जो इतने इजीली अवेलेबल है, राइट? आपके लिए बहुत इजी होता है कि भूख लग रही है, चलिए बाहर का एक पैकेट लेके खा लेते हैं। तो ऑल दीज हैव केमिकल्स एंड प्रेजर्वेटिव्स एंड what all other substances which are not natural and chemicals, definitely अगर वो आपके बॉडी में जा रहा है, तो जो नेचुरल केमिकल आपके बॉडी में है, द हॉर्मोन्स, उसको डिस्टर्ब करेगा जब आप कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल अगर आप बाहर से खा रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्यों हो रही है। I think we also have a question where Sharon is asking that she feels tired in the morning even after sleeping 8 hours. Is this also related to hormonal imbalance? See, when it comes to sleeping and feeling tired, definitely there is some imbalance. You yourself mentioned that you are taking a proper sleep of 8 hours, but then again you are feeling tired. So first we have to analyze that sleep has two factors. One is the quantity, which is like 7 to 8 hours. Second is your quality. Are you getting the deep sleep? क्या आपका प्रॉपर है, अनडिसरप्टेड है, क्या आप इन बिटवीन जाग रहे हो, नहीं जाग रहे हो, एवरीथिंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्लीप, स्लीप इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई अ हार्मोन। अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा है, मे बी यू आर स्लीपिंग फॉर 8 hours, आपकी क्वालिटी खराब होगी एंड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे यू विल फील फटीग, यू विल फील टायर्ड। ऑल्सो द डाइट प्लेज अ वेरी बिग रोल हेयर। अगर आप प्रीवियस डे में कुछ भी जंक खाते हैं एंड योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नॉट properly managed, and if your diet is deficient in magnesium, तो स्लीप क्वालिटी धीरे धीरे खराब होने लगती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप सुबह उठते हो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड स्लीप ऑफ 8 hours, you might feel tired and fatigue and not feel like doing any work. So of course it can be something which is related to your hormonal imbalance. I guess, Sharon, if I'm pronouncing your name correctly, I hope I answered your question. And I think Adrija, she's Sharon Joshi. Sharon Joshi. Okay, okay, yeah. Yeah, Anjali. So definitely, ये वाला जो भी slide है, these are like the phases in women's life. We all know, like we go through so many phases, just like the menstrual phases we saw in the previous initial slides, like from being a kid and then growing up, and then the adolescent time where in like your hormones like hit you very hard, um all the characteristic, and then you become an adult and then mother and everything. So a whole transition is going on in a women's life, and it's very important to take care of yourself, right? हार्मोन तो हमने देख ही लिए कितना हेवायर है, फेजेस भी ट्रांजिशन है, तो becomes very important कि खुद का ध्यान पहले हम लोग रख लें। Absolutely, absolutely. Thank you for setting the tone right, Adrija. Now, I have a question for the audience. और मैं ये पूछना चाहूंगी, how many of you have PCOS today? As you know, we have this slide in front of us. It says 1 in 5 women in India have PCOS. So that's what we're trying to say is कि 5 में से 1 और को PCOS है आज की डेट में. And the harrowing fact is that 90% of it goes undetected. राइट 90% औरतों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको पीसीओएस है, वो डिटेक्ट ही नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो पहले यहाँ पे जानते हैं कि किस किस को पता है कि उनको पीसीओएस है। सो रूपाली सेज आई हैव लो एएमएच नॉट पीसीओएस। ऑलराइट रूपाली, बट सो ऑफ कोर्स वी विल डू एंड हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि आप सेल्फ डायग्नोस कैसे करें पीसीओएस को। शारन सेज आई हैव पीसीओडी। ऑलराइट, so all hormonal imbalances. Let's hear it from all of you. Sanchi says I have PCOS, and even if you have thyroid, please comment in the chat box. We will come to the difference, Sharon. What is the difference between PCOD and PCOS? I think Adrija will be in a better position to give you an idea about the difference. But Rupali says I have thyroid, and I want to know all of you who have PCOS and thyroid. Come on, let's come forward and let's face it.
and let's try to understand how is that we can reverse this condition simply by our diet and our exercise regime. Kavita, I have thyroid. Kiara says I have. So, Kyra, Kiara, you have PCOS or you have thyroid? Let us know. All right. So, Adrija, I think there was a question where they want to know what is the difference between PCOS and PCOD. दोनों में difference क्या है? I think PCOD is limited to your ovaries and PCOS, Yes. multiple symptoms. But can you हम्म। explain a bit more in detail? यस। तो पहले अगर मैं बात करूं पीसीओएस और पीसीओडी, डेफिनेटली द नेम इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड अनदर इज योर डिसऑर्डर, राइट? तो Right. व्हेन वी टॉक अबाउट पीसीओडी, इट्स बेसिकली जैसे आपने बताया कि सिर्फ ओवरीज तक ही ये है, सीमित है, वेर इन आपके बॉडी में इमेच्योर एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यू माइट गेट ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, मे बी आपके ओवरीज थोड़े से स्वेलन हो रहे हैं, बल्कि ओवरीज हो रही हैं, जिसके वजह से यू माइट बी गेटिंग इरेगुलर साइकिल एंड मे बी फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है आपके ओवरीज में। एंड यहाँ पे अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो वो लेस सीवियर होते हैं। वेर इन अगर मैं पीसीओएस की बात करूं, विच इज अ सिंड्रोम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स एंड एवरीथिंग, एंड इट्स मोर वास्ट। इसमें आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही है। एंड यहाँ पे अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, लाइक यू स्टार्ट गेटिंग हेयर, फेशियल हेयर, जिसको हम हिरसुटिज्म बोलते हैं, एंड योर बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग टू मच ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, राइट? एंड इससे क्या होता है, आपके एग्स में भी प्रोन हो जाते हैं टू बिकम अ सिस्ट। डेफिनेटली इमेच्योर एग्स हैं एंड देन दे बिकम योर सिस्ट, देन irregular cycles, missing of periods, weight gain, weight fluctuation, insulin resistance, and thyroid, weight stuck होना, and all those things definitely severe होता है in case of PCOS. Now let's understand from you, Adrija, and I'm sure जनता ये जानना चाहेगी कि हम्म। आजकल इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? बिकॉज पहले तो हमने अपनी दादी नानी के मुंह से कभी पीसीओएस सुना ही नहीं था. इनफैक्ट आई नेवर हर्ड इट फ्रॉम माय मदर कि पीसीओएस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती थी. अब जाके ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है कि बहुत लोगों को पीसीओएस है. लोग जानकार हैं, लोगों को पता है कि उनको पीसीओएस है, बट स्टिल अभी भी बहुत ऐसी बहुत बड़ी जनता है और बहुत बड़ा परसेंटेज है जिनको पता ही नहीं है कि उनको पीसीओएस हो सकता है. सो बट वेयर इज दैट वी आर गोइंग रॉन्ग, एंड क्या गलत हो रहा है आज के एनवायरमेंट में? क्यों हो रहा है ये सब? Yes. See, as we say कि PCOS, whether it's PCOS or your PCOD, it's a lifestyle disorder हो रहा है। आपकी overall lifestyle कैसी है, the type you are, leading your life defines what, आपको क्यों हो रहा है। अगर मैं पहली बात करूं, definitely hormonal imbalance is a point wherein and then other than that we have the pollutants। हम लोग आजकल बाहर निकलते ही you have all the smoke and everything, pollution बहुत ज्यादा है। देन आजकल जो हो गया है, that is your sleep cycle, disrupted sleep cycle। we are not sleeping properly, we are not giving our body the amount of rest it requires to actually make and produce those hormones so that they can act the next day properly। लैक ऑफ स्लीप, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है हमारा। वी ऑल हैव दो स्मार्टफोन्स इन आवर हैंड, और रात में सोने से पहले वी ऑल स्क्रॉल थ्रू इट, एंड टाइम भी नहीं पता चलता है कि कितने दिन देर तक हम स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड देन स्लीप शेड्यूल हमारा कि अच्छा अभी तो 11 बज रहे थे, अब देखो 1 बज गए। वी ऑल हैव दैट, कभी ना कभार सबने फेस किया है। तो स्लीप प्रॉपर नहीं है, जिसके वजह से आपका प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिल रहा है। देन ऑफ कोर्स आपका डाइट डेफिनेटली प्लेज अ वेरी बिग रोल, एंड ईटिंग जंक एंड ईटिंग आउट एंड नॉट नोइंग एग्जैक्टली कि हम क्या खा रहे हैं। इट्स नॉट कि जो भी बाहर मिल रहा है या अगर मार्केटिंग हो रही है कि इट्स वेरी हेल्दी, इट्स नॉट ऑलवेज हेल्दी। यू हैव टू बी वी हैव टू मेक अ वेरी conscious decision while choosing your food। we have to be very smart and intelligent while picking up the food from the market, या फिर बाहर भी खा रहे हैं। इवन अगर हम घर पे भी बना रहे हैं या घर में भी खा रहे हैं, तो उसमें भी अगर हम डीप फ्राई कर रहे हैं या फिर स्टेल फूड ज्यादा खा रहे हैं, ऑयल एंड बटर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो है। एंड यूज ऑफ प्लास्टिक, डेफिनेटली यूज ऑफ प्लास्टिक इज अ लाइफस्टाइल अभी हमारा बन गया है, वेर इन वी आर डूइंग इट।
एंड उससे भी हमारा प्रॉब्लम तो हो ही रहा है. तो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर. व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये एक चीज नहीं है कि ये ठीक हो गया तो ठीक हो गया. देर आर लॉट ऑफ थिंग एंड इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्शनेबल, डेफिनेटली अगर हम प्रॉब्लम हमें पता है कि क्यों हो रहा है, वी कैन टेक एक्शंस, राइट. सो पहला तो आता है कि आप अपना डाइट ठीक कीजिए एंड लेट्स फोकस ऑन फैट लॉस रादर देन गोइंग फॉर अ वेट लॉस और कि मेरा वेट बढ़ जाए, वेट कम हो जाए. नहीं, फोकस ऑन फैट लॉस, फोकस ऑन योर इंच लॉस कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन अ हेल्दी मैनर. वी समटाइम्स थिंक कि अच्छा 1 महीना है, इसमें मैं 5 किलो कम कर लूंगी, 6 किलो कम कर लूंगी. नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. आप स्लोली ग्रेजुअली अपना वेट मेंटेन कीजिए. And PCOS is something wherein we suggest to avoid milk and milk products, especially if you don't know where the source is coming from, right? Because अगर आप पैकेट दूध वगैरह ले रहे हैं तो डोंट गो विद दैट. इट्स बेटर टू अवॉइड इट. एंड ऑफ कोर्स जो भी बाहर के एडेड प्रिजर्वेटिव्स या फिर वी ऑलवेज से कि एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ पैकेट, अवॉइड दैट फूड. फ्रेशली अवेलेबल है, फ्रेशली यू आर प्रिपेयरिंग एट योर होम, गो फॉर इट. हैव योर ग्रीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाना है. एंड दीज आर सिंपल एक्शनेबल जो सब एवरीबडी कैन इनकॉर्पोरेट इन देयर लाइफ. And everyone who is present with us and suffering from PCOS and PCOD, you can definitely try incorporating these small changes, and you will see the change in your symptoms and everything. Lovely. Thank you so much, Adrija. And we have Radhika's story in front of us, where, before we move on to Radhika's story, I actually want to see if the participants here and if the audience here has some questions. Agar aapke kuch bhi questions hai, PCOS, thyroid related, let's have those questions and we'll start taking them one by one. Till then, I'll would want to share Radhika's story with everyone. Who was she and how did she actually reverse her condition? तो राधिका को भी I heard आप में से सब लोगों को I think Sharon, Sanchit, Rupali, Kavita, Kiara, all of you have PCOD and Kiara also has thyroid. So she was a similar girl who came to us, young girl. I think Adrija, what must be your age? 22, 23, I remember. 23, 23, 23, yes. 23, right? And she had this early diagnosis of PCOS. Good that she found it early, and she had this, thyroid, which was more of a hereditary thyroid that she had. And I swear, I mean, she had इतना दर्द होता था उसको periods में वो. She actually, when I heard her over the phone, she was in tears at her periods were so painful that she always used to carry a water bag whenever she used to go anywhere in the public while her periods were on. So that's about Radhika. Now, why did this happen to her? Because of course she had hormonal imbalance and these hormones were acting up, and she did not understand कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है. Although she had tried a lot of things, she had tried a diet regime, and she used to tell me that her schedule is very busy, तो कुछ हो नहीं पाता है उससे. But she came to me and I promised her that, look, if you give me 3 months, we will reverse your condition. And that's what Adrija did with her. And I would like to give credit to Adrija where she actually helped her with her condition. And Adrija, why don't you highlight कि हमने ऐसा क्या किया राधिका के साथ जो उस पे काम किया और उसकी उसकी कंडीशन रिवर्स हो गई. Yes. So when Radhika came, definitely very young age, wherein ये बोलना कि आपको चिप्स नहीं खाने हैं, बाहर का खाना नहीं खाना है, कुकीज की तरफ नहीं देखना है और समथिंग. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड एंड समथिंग. और उसके लिए भी बहुत था. एंड शी केम विद दैट ओनली कि मैं कैसे करूं. जॉब है, अभी अभी मैंने कॉलेज खत्म किया है, पढ़ाई है, दे हैव दैट एनर्जी कि काम करना है, बहुत काम करना Correct. है, She was in a सीखना है. night shift, I remember her. Yes. तो नाइट शिफ्ट वाज अगेन अ प्रॉब्लम. एंड देन थायराइड ऑफ कोर्स, वेर इन वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड पेनफुल पीरियड्स वाज समथिंग जिसमें था. तो आई वाज लाइक कि सी, अगर पेनफुल पीरियड्स एंड इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग, small changes you definitely have to make. And we never say that weight loss is the main focus. It's always has to be a byproduct of what you are doing, right?
तो इसके में पहला यही था, व्हाट वी डू एट लाइका, दैट वी गो विद द फेस बेस्ड डाइट प्लान। तो उसमें बेसिकली वी स्टार्टेड ट्रैकिंग हर साइकिल, वेर इन एंड स्टार्टेड ट्रैकिंग कि उसका कौन सा पर्टिकुलर फेज कितने दिन का है, एंड अकॉर्डिंग टू हर फेजेस कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट कब देना है, कौन से टाइम पे प्रोटीन इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप में आई हैव टू गिव मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब और इन अ सिंपल कार्ब्स, सारा कैलकुलेटेड वे में उसके पास गया था। And then, of course, the inclusion of different fruits, seeds, nuts, and green vegetables. And then, of course, उसको giving healthy alternatives जो बाहर वाले खाने के थे वो था। प्लस थायराइड में भी होता है कि you have to avoid certain kind of food जो आप नहीं ले सकते because they affect your thyroid hormone. So the main approach what we did was a cycle sync diet plan and the fitness regime. And that actually helped her with all the home remedies. The Ayurvedic doctors gave her home remedies, जो kitchen remedies हमारे kitchen में है, and we are not even aware कि वो कितना powerful है। तो छोटे छोटे inclusion different phase के according, different infused water, detox water, herbal teas लेने के बाद she फर्स्ट मंथ में इट वाज लाइक कि ठीक है सिम्टम्स कम हो रहे हैं धीरे धीरे, एंड देन यू गेट दैट सेल्फ रियलाइजेशन, यस इट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। एंड देन शी वाज लाइक कि अब तो रिजल्ट दिखना है तो करना ही, एंड देन शी वाज वेरी कंसिस्टेंट विद with her diet and fitness, and that was all the approach. It was not very strict, but small modifications in her lifestyle and in her diet plan was something जिस पे हम लोगों ने बहुत काम किया था, and we have the result in front of us only, 3 months वाला। Absolutely, Adrija. Thank you so much for highlighting that. And now I would like to actually tell the audience that what is that we do at Laika. So we are a hormonal balance platform for women, specifically for women. हम सिर्फ आप जैसी औरतों को help करते हैं. We don't help men because we think that we are very different from them and we require a different platform altogether. And that's why we've created this different platform and a very unique platform just for women. We don't serve men here. And like on the screen, आप देख सकते हैं, we like to call it the Laica's hormonal 1, 2, 3 hormonal balance approach. Okay, as Adrija very rightly said, with Radhika, she was someone like you. She had all these issues. She had tried everything on earth. उसने जिम जाने की कोशिश की थी, उसने डाइट करने की कोशिश की थी, but nothing really worked for her because होता क्या है, we as humans and especially as women, we lack the motivation and we lack that, we always need that push. But I mean, we start a diet and then we leave it, right? But here we did a very systematic, we used a very systematic approach with Radhika. We said, hey, you don't have to just forget about having chocolates or forget about having that rasmalai, right? Especially abhi Diwali time aa raha hai, so I'm sure everybody is going to indulge in a lot of mithai and Definitely, definitely. eating a lot of unhealthy food. But उस unhealthy food को भी healthy कैसे करना है? That's what Adrija's speciality is. So I like to explain that what is the step 1, 2, 3 hormonal balance approach, and how is that we firstly detect your hormonal imbalances. So one, if you already know that you have PCOS, you have thyroid, well and good. But we get into the nitty gritties of it. हम उसके एकदम नब्स को पकड़ते हैं. इसको बोलते हैं निदान परिवर्जन आयुर्वेदिक language में. So we like to call it the lifestyle quotient and the menstrual wellness quotient, where we give you a questionnaire which has like, mind you, it has like 100 odd questions. मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, but that gives you insights about your body where you don't even know that अच्छा मेरे साथ ये हो रहा था तो क्यों हो रहा था. So lifestyle quotient is very basic. We ask you, stuff like your age, weight, height, well, how is your menstrual flow, how is your menstrual cycle. बहुत basic stuff हम इसके अंदर पूछते हैं. What is your daily routine? And then we give you a lifestyle quotient score. Whereas we have this specialized, scoring methodology, which we call the menstrual wellness quotient. Now, hear me very carefully. It's called menstrual wellness because your menstruation, your cycle is actually the reflection of a woman's health. अगर आपके periods normal है, अगर आपके periods painful नहीं है, that reflects that you're doing absolutely fine and kudos to you, right?
but we have a menstrual, so we do a menstrual wellness assessment where we actually get into the nitty-gritties, जहाँ पे हम देखते हैं आपके पेन लेवल्स क्या हैं, आपके concentration लेवल्स क्या हैं. Now this is something new, right? Concentration levels मतलब जब अब आप इस वर्कशॉप में हैं, आ, क्या आपका पूरा पूरा ध्यान है इस वर्कशॉप में, या आप खो जा रहे हैं, आपका टेंशन स्पैन कैसा है, या फिर आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं और एक मीटिंग चल रही है तो आप कितनी देर सुन पा रहे हैं, राइट? तो ये सब एक्चुअली हमारा, दैट्स एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन आवर हार्मोन्स, दैट आज आप कौन से फेज में हो. आप ओव्यूलेशन फेज में हो तो यू फील लाइक ओ आई एम अ सुपर वुमन टुडे, आज मैं वर्कआउट भी कर लूंगी, आज मैं जिम भी कर लूंगी, एंड आई डू एवरीथिंग ऑन अर्थ. यू फील दैट वे. So when I explained that phases, week 1 is never same as week 2, and week 2 is never same as week 3 and week 4. You feel like you're a different person. And that's why we ask you questions on pain, arousal, concentration levels. We ask you, about your menstrual cycle. How is that you feel? How is that you feel connected with the world? Are you somebody who, when you go to a party, you're sitting with a glass in the corner, or you're somebody who's actually dancing on the floor? That also depends on your menstrual phase. So we have very perfectly blended this entire solution, which we call the menstrual wellness assessment. We have a look at your water retention, negativity, arousal levels, appetite, also coordination and concentration. So how is your low motor concentration? Do you have brain fog? A lot of menopausal women will have brain fall. Sometimes होता है ना कि हम कोई कोई चीज रख के भूल जाते हैं. नाउ यू वुड से कि अच्छा ये तो बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल बात है ना कि अगर आप भूल जा रहे हो, बट इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट कैजुअल, इट कुड बी रिलेटेड टू योर हार्मोनल हेल्थ. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट इतना कौन डिटेल में जाते हैं. यस, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, बिकॉज नो डॉक्टर वुड गेट इनटू दीज निटिग्रिटीज, और इतना डिटेलिंग कोई डॉक्टर नहीं करेगा. हम इतनी डिटेलिंग में जाते हैं. इसके बाद हम आपको एक मेंस्ट्रुअल वेलनेस क्वेश्चन बना के देते हैं. सो बेसिकली आफ्टर ऑल दिस असेसमेंट, then we do an Ayurvedic based menstrual evaluation where we call it the Prakriti and Vikriti assessment. Prakriti is basically the nature of your body, and Vikriti is basically all the ailments that you have. Once we have a clear picture of who you are and your menstrual assessment, we have a thorough evaluation of you, we have seen all your reports, then we go towards step 2 where we help you manage these imbalances, like Adrija said, through a cycle sync diet plan. Now what does that mean? So you saw week 1 हमारा menstrual phase है, right? इस टाइम पे सारे hormones dip कर रहे हैं, right? तो ऐसा क्या खाएं menstrual phase cycle में? आपने सुना होगा ना that दादीज and नानीज used to say कि menstrual phase या फिर जब आप periods के दिनों में आपको बहुत ठंडा नहीं खाना चाहिए या फिर खट्टा नहीं खाना चाहिए. So something related to that. So I mean, I used to feel at that point of time that it doesn't make any sense, or, this is not scientific. But everything has a science attached to it. Especially, you must have seen when you are, if you're trying to get pregnant and when you're in your ovulation phase, doctor says, why don't you have folic acid, right? Because it helps you with all your hormones actually coming in that position where your womb is preparing for a baby, right? So in your follicular phase, for example, to support your, so in your luteal phase, support your progesterone synthesis, you need to have food items which are rich in zinc, जैसे sunflower seeds हो गया, रागी हो गया, quinoa हो गया. Ovulation phase में आपको vitamin B rich foods खाने चाहिए, right? तो इस तरीके से हम आपको कुछ भी रैंडम नहीं दे रहे हैं. नहीं बोलेंगे आपको कि हाई प्रोटीन खाओ और अपना लड्डू खाना छोड़ दो. लड्डू को भी कैसे आप उन सीड्स के साथ बनाओ, right? So we do seed cycling. Adrija can of course explain that in a lot detail कि कैसे सीड्स के साथ उस लड्डू को बनाइए ताकि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस में वो आपको हेल्प करे, और अलग अलग फेज में क्या क्या आप किस किस तरीके के सीड्स खाइए, राइट? सो नो कीटो, नो हाई प्रोटीन, नो लो कार्ब, नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी खा के हम अपना हार्मोनल इम्बैलेंस कम कर सकते हैं. एंड देयर वाज अ क्वेश्चन इन द चैट, आई थिंक somebody said that can I lose like 4 to 5 kgs with a healthy diet? Sharon, yes, but if you have a condition like PCOS or thyroid,
ideally, I mean, you should not be looking at, like I said, as women, हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम लोग बोलते हैं कि बस हमारा वजन कम हो जाए, वेइंग Yes. स्केल पे कम हो जाए। बट क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि काश हमारा इंच लॉस हो जाए, हमारा फैट लॉस हो जाए, हम एक्चुअली मसल गेन करें। एज विमेन वी हैव टू गेट स्ट्रोंगर एंड वी हैव टू गेन मसल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो Yes. not that I'm not saying that we should not aim for weight loss, but we should aim for overall health, not just weight loss. So yeah, I have a lot of questions pouring in, saying pimples. And yes, Sharon says, I want inch loss, I have a tummy fat. Absolutely, Sharon. So we can help you with that. And it's absolutely possible even if you have PCOS. It takes a longer duration, but not that I'm not denying that it cannot happen. It will happen. Definitely will happen. And we've done this in the past with a lot of women like you. So, coming back to how do we manage the imbalance? Like I said, we give you cycles saying diet plans, which are very scientific, and it has a beautiful element of Ayurveda into it. We believe that during your period days, you must be doing some yoga asanas so that if you have period pain या आपको फ्लो की प्रॉब्लम है, फ्लो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो आप कुछ पर्टिकुलर पोज करते हैं, तो उससे आपके फ्लो में फ्लो को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है। Then we believe that you need a specific fitness regime according to your cycles. इसका भी एक साइंस है, राइट? कि उस फेज में Definitely. आप कौन सा फिटनेस regime फॉलो करिए, राइट? एंड देन if required, I mean, if your condition is very critical, then we give you some Ayurvedic and nutraceutical products as well, where it basically supplements with your condition, with your diet, with your exercise regime, with your fitness regime. You might need some Ayurvedic medicines also. So no allopathic, because we know that if we take allopathic medicines, it has some or the other side effect. And you must have seen that if you go to a doctor, they'll say, okay, you take metformin, or you take these hormonal pills, or birth control pills. But that's not the right way. I mean, वो आप करोगे, आपको immediate relief मिल जाएगा, but you'll go back to square one. That's what happened with Radhika, and that's what all of us as women we've been facing, and that's why we are conducting this workshop to educate you guys that just popping a pill is easy, guys. It's very easy. बहुत ही आसान है कि एक दवा ले लो अपने पीरियड पेन के लिए या अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलाइज करने के लिए, बट अगेन यू फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप। शायद उस टाइम पे वो ठीक हो जाएगा, राइट? आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा, but long term you'll have issues. So let's look at how is that, coming back to people who think we really lack the motivation, and how is that Laika can help you actually motivate and keep that push. So we have a community where we add you in a community like you girls, all these women who are there, and you get to talk to each other. You can share whatever you want to, all the health tips, the recipes that you prepare. So basically we have a community come engagement support, where everybody keeps pushing each other, and we play a lot of games, we play challenges, we share a lot of tips with you on everyday basis, and we do these workshops regularly. So that's about Laika's 1, 2, 3 hormonal balance approach. And I would like to take some questions, and then I have a little bit of surprise planned for all of you, which I like to share. So let's come to the surprise, and let's take some questions. Meanwhile, Adrija, I think Yeah. I think we have some questions here actually. So yeah, so I can see this is Sachi. Sachi is asking that is hyperpigmentation on other body parts other than the face is also a symptom of PCOS? Yes, Sachi, definitely. If you have hyperpigmentation, आपके अगर नेक के पीछे है, अंडर आर्म्स में है, थाइज, इनर थाइज के अराउंड हो रहा है, आपके एल्बोज बहुत ज्यादा डार्कनिंग हो रही है, नीज में अगर आपका बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, डेफिनेटली दीज कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ पीसीओएस। एंड स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके नेक के पीछे अगर आपको डार्क पैच दिख रहा है, दैट इज साइंटिफिकली इट्स कॉल्ड द एक्यांथोसिस निग्रिकेंस,
which is a symptom of insulin resistance as well. तो Sachin becomes very important to check कि आपके कौन से जगह पे है. If you have started getting hyperpigmentation behind your neck, then definitely you should go for your, HbA1c level, blood glucose level आप एक बार check करवा लीजिए. And this can definitely be a symptom of, PCOS. PCOS, absolutely. So, Adrija, there's a question, and of course, this is a clear case of PCOS, but I would like to confirm it with you. Charu says, my face is full of pimples right now just because of PCOS. Is it correct to leave all junk food? Oh man, of course. डेफिनेटली से अगर एक्ने एंड पिंपल्स की बात करें तो वन इज जो डेफिनेटली डाइट, अगर आप बाहर का खाना छोड़ रहे हो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि पिंपल्स कम हो जाए, एक्ने कम हो जाए. बिकॉज अगेन बाहर वाला जो फूड है, एज आई मेंशन, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, एंड देन फैट कंटेंट भी बहुत हाई होता है उन सब में. इफ यू आर चूजिंग समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड विच हैज अ लॉट ऑफ फैट कंटेंट एंड हिडन शुगर उसमें होते हैं, तो डेफिनेटली कटिंग आउट फूड्स जो आप बाहर से पैकेट वाला फूड्स खा रहे हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. बट ऑफ कोर्स सिर्फ ये करने से सही नहीं होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पिंपल्स क्यों आ रहे हैं. इज इट थ्रू आउट द टाइम? हाउ इज योर गट हेल्थ? हाउ इज योर स्लीप? हाउ इज योर स्ट्रेस? यू हैव एनी हार्मोनल इम्बैलेंसेस? कि आपके बॉडी में एंड्रोजेंस विच आर लाइक द मेल पैटर्न, मेल वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका ज्यादा या कम तो नहीं है. देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपको होता है, ड्यूरिंग द पीरियड्स आर यू गेटिंग योर पिंपल्स or before that. So all these factors have to be checked, and definitely insulin resistance and any hormonal imbalance can give you that pimple. तो एक actionable is definitely बाहर का अगर आप खा रहे हैं तो stop eating that. If not, stop, minimize कर लो जितना भी खाते हो, and let's switch to homemade बना लेते हैं. जो भी बनाना है घर पे बनाते हैं. So that is going to. Charu, I hope you've answered your question. I don't know if Charu is online here with us, but all right, Charu, we'll send you that answer probably once we're done with this workshop. All right, do we have more questions? And it's Yes. time for us to actually share the big surprise with all of you. So, yeah, so Laiqa is actually launching a hormonal balance builder program, and this is specifically designed for people who have PCOS, thyroid, you have, acne or hair fall issues, you have, irregular periods or painful periods. And mind you, if as women we think कि painful periods तो होने ही है, periods में दर्द होना ही है. नो पीरियड्स में दर्द नहीं होना चाहिए. अगर आपको पीरियड्स में अनबेरेबल पेन है, अगर आप बेड से नहीं उठ पाते हो और अपनी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पाते हो, अगर आपको ऑफिस मिस करना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है, और यू हैव टू टेल योर मैनेजर दैट आई एम इन पेन, दैट मीन्स इट्स नॉट नॉर्मल and you must address it. So this is for all the women out here who have these issues, and all of you said that you have, so many of you said you have PCOS, thyroid. We are launching a hormone balance builder program, and now I'm sure सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब दिवाली आने वाली है, अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे, अभी तो हम इंडल्ज करेंगे दिवाली में, दिवाली के बाद ही करेंगे. तो हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है, and we are just launching it. But firstly, before I tell you what the actual surprise is, I like to show you what is that you get in this program and how is that we're different. So like I said, so you get a doctor, a health coach, and a dietitian in one WhatsApp group along with you after you've enrolled for this program. This doctor is an Ayurvedic doctor. Adrija is our dietitian, and we have many more dietitians like Adrija here. And you get a health coach, a dedicated health coach who actually takes care of your end-to-end needs and your daily requirements. And you can speak to the doctor on the WhatsApp group, ask for all your queries you have. So where would you get that? In one WhatsApp group where you get a doctor, a health coach, and a dietitian at your fingertips. So that's the specialty that we have at Laiqa. And if you compare us with other wellness programs, like I said, our assessment is not generic. हमारी assessment बहुत ही scientific है. It's a personalized assessment test that we do. And we actually like to call ourselves that we are super personalized, because we give you a doctor,
a dietitian, a health coach. We give you all these diet plans which are synced according to your cycle. जो आपके phases चल रहे हैं उस हिसाब से आपके डाइट प्लान बनते हैं. कोई भी कैलोरी डिफिसिट डाइट प्लान नहीं रहता है. आपको लड्डू खाना है, आप वो लड्डू खाइए, बट हेल्दी वे में खाइए. आपको पिज्जा खाना है. Adrija is very smart, huh? So she gives pizzas to her clients. I've seen that, but Yes. she actually makes that pizza very healthy. She, if you could, just tell Yes, us how do you make that pizza? I always say that, the concept of pizza, अगर हम देखें, it's not at all unhealthy, right? You are getting your carbs, जो base है, then you are putting lots of toppings in the form of vegetables, and then you can add the protein. आप chicken add कर सकते हो, पनीर add कर सकते हो, and cheese is something like I love cheese, and it has so much of protein as well, and calcium definitely. तो आप वो भी add कर रहे हो, एंड देन यू आर हैविंग इट, राइट? तो अगर आप हम कंसेप्ट देखें, इट्स अ कंप्लीट मील. इवन हम घर में भी क्या खा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी यही खा रहे हैं, तो उसको पिज्जा के फॉर्म में ही खा लेते हैं. बल्कि ये बेक होके आ रहा है, तो चलिए आपका फैट कंटेंट भी, तेल भी यूज नहीं हुआ. बट द गलती कहाँ होती है कि हमें वो इतना अच्छा लगता है खाने में कि वी टेन टू ईट अ लॉट, और हम लोग एक पूरा पिज्जा खाना शुरू कर देते हैं. So again, here comes the portion control part, wherein throughout the journey I teach. हमेशा मैं बोलती हूँ कि it's not about what you are eating, but eating it in the right way. Right? आप सब कुछ खाइए, but in the correct way, in the correct form. If you are having, let's say, cheese loaded margarita, double cheese margarita pizza, over that go for, जिसमें overloaded veggies है, overloaded, you have your proteins, veggies and everything. आप वो वाला select कीजिए. Rather than going for 4 slices, आप 2 slice खा लीजिए, 1 slice खा लीजिए, and आप घर पे बना लीजिए. It can be made Absolutely. easily. Absolutely. So all of you can, like you rightly heard, you all can have a healthy pizza Yes. with portion control in the right manner. So Sharon is asking, can you make donut healthy? All right, Sharon. Definitely. During the COVID time, I was into like कि चलो कुछ तो बनाते. I think everybody has tried multiple recipes during those time. तो मैंने सोचा why not donut? तो I actually made a multi-grain donut. उसको मैंने bake किया था, no मैदा at all. And instead of sugar, मैंने date powder use किया था उसमें. And then I baked it, and dark chocolate मैंने लिया, dip किया, and I enjoyed it. पूरे घर के लिए मैंने डोनट बनाया. इट्स नॉट डीप फ्राइड, उसमें कोई व्हाइट शुगर नहीं है, डेट पाउडर था. हाँ, डेट पाउडर भी अगेन लाइक कैलोरी कम करना है उसको कम करो. मल्टीग्रेन था, आई एडेड सम रागी, होल ग्रेन, सम ब्रैन एज वेल, एंड वो बहुत अच्छा था. खाने में भी अच्छा था. मे बी यू कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग एट योर होम, यू विल डेफिनेटली लव इट. Lovely, absolutely. So, Sharon, I think you have your answer, and now you know how to make donuts healthy, right? So, about this hormonal balance builder program, I like to explain that this is what you can achieve. You, most importantly, we should not be just looking at weight loss and weight management, girls. Please, let's take it out of from our head. We should be looking at our overall well-being, overall health, whether your overall menstrual health is improved, whether you feel energetic. जब आपकी डोरबेल बजती है तो क्या आप दौड़ के बेड से उठ के जाते हो कि आप वो स्लॉक करके अच्छा कौन खोलेगा दरवाजा? वैसे नहीं होना चाहिए. We are all, we should be so energetic. Our energy levels should be elevated, and that will happen when you have a overall enhanced well-being. Your menstrual cycle, your menstrual health is healthy. Emotionally you're healthy. Your metabolism is good. अगर आप चावल भी खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, carbs भी खा रहे हो, you have this amazing metabolism that you're not putting on weight. You have a good digestive system. Your gut health is improved. You don't feel like having sugar. जब आपको क्रेविंग्स होती है और शुगर क्रेविंग्स होती है, एंड बाय द वे शारन, अगर डोनट खाने का मन करता है, दैट मीन्स यू हैव सम और द अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, राइट? और यू नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन, एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंस टू यू. रात को हम सबको मन करता है डिनर खाने के बाद कि और चलो थोड़ा आइसक्रीम खाएं और मीठा खाएं, राइट अद्रिजा? But I mean, Yes. that's because your food lacks enough protein or enough nutrients in it. So you Yes. have some or the other nutrient deficiency. So not Mm-hmm. just weight loss, but I'm not saying as women we want to lose weight, we want to look good.
We want that inch loss, but that's what we should be looking at. Inch loss and looking beautiful. Our skin should be radiant, right? And we, most importantly, अगर आपकी नींद अच्छी हो रही है, you're having a good sleep, you know, ultimately you're preparing yourself every single day for the battle that you do every single day, right? So this is what we achieve at Laica, not just weight loss, not just losing weight on the scale, but overall improved menstrual health is what we aim at, and that's what all of you as women should aim at. And now I'm going to reveal the pricing of this program. So the Hormone Balance Builder program is the MRP for this program is 12,000 rupees. In this workshop, I'm giving it away for a special discount of 7,800 only, which is essentially saying 2,600 rupees a month at a 35% whooping discount. All you need to do is pick up your phone, scan the QR code, and you need to pay only 1,000 rupees to block your seats today. Just 1,000 rupees for this 3 months program. And we have EMI options available. So, you know, you can pay the 2,600 rupees on monthly basis. And of course, you know, you can speak to my team. But this discount is available, and this is a Diwali discount that we are giving away. This is available only in this workshop. And we, of course, for the next 5 minutes, we're going to keep it on, and we'll keep taking questions regarding the program, regarding your health, whatever questions you have. So please shoot, and let's take advantage of this program, and please enroll in this program if you have PCOS, thyroid. This is for all the women who have PCOD, thyroid, irregular periods, acne, hair fall, all these hormonal issues. This program is specially built for you. And believe me, if you don't reverse your condition, if you don't see a change, I am going to challenge you with another surprise. But let's hear it from you guys, that how many of you are interested in this program. First of all, let's hear it. कितने लोग interested हैं इस program में? और आपको क्या लगता है इस program के बारे में? You think this program is it appropriate for working women? Absolutely. Absolutely, Sharon. This is appropriate for working women. We you know, our doctors are available. So Sharon, I mean, Adrisha, Yes. Sharon has a question that I don't cook much, and I would like you to address that, because I think सब working professionals को ये problem आएगी, and they will say कि मुझे हाँ, अपने लिए अलग से खाना पकाना पड़ेगा. मेरे पास ऐसी बहुत सारी औरतें आती हैं. So बिल्कुल please बिल्कुल. address this. कल ही मेरी बात हो रही थी, वेर इन शी इज अ स्कूल टीचर एंड शी ऑल्सो सेड कि मैं तो सुबह उठती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, आती हूँ, एक बार खाना बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बना सकती, आप मुझे कुछ ऐसा मत देना. तो अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली दैट्स ए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ अर लाइफ. इट कैन नॉट बी कि आप कुछ एक डाइट फॉलो कर रहे हो तो आप जॉब छोड़ दो, फैमिली के साथ खाना खाना छोड़ दो, सोशल लाइफ एंजॉय करना छोड़ दो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इवन इफ यू आर नॉट कुकिंग मच, दैट्स ओके. आप डेफिनेटली घर में अगर थोड़ा भी कुक कर रहे हो, जो आप यूजुअली आपके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में खा रहे हो, वही रहेगा विथ सम स्लाइट मॉडिफिकेशन. दैट्स इट. इट्स अबाउट कि हम किस तरीके से प्रेजेंट डाइट को मॉडिफाई करना. इट्स नॉट अ चेंज, इट्स अ मॉडिफिकेशन. है ऑलवेज से कि छोटा छोटा मॉडिफिकेशन कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, वो समझना है. तो इट्स नॉट कि बहुत सारा कुक करें एंड पूरे दिन हम खाना ही बनाए जा रहे हैं, या वर्किंग वुमेन. एंड डेफिनेटली वर्किंग वुमेन है तभी हम यहाँ पे हैं कि टू हेल्प देम, कि आप काम के साथ साथ कैसे आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है. दैट इज व्हाट वी आर हियर टू हेल्प यू विथ एंड गाइड यू प्रॉपरली. तो कुकिंग का प्रेशर बिल्कुल नहीं है. एंड आई ऑलवेज से कि अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो एंड आफ्टर फॉलोइंग दैट यू आर सेइंग कि oh my god, I am following a diet, I cannot eat this and eat that, then you are in the wrong place, right? A diet should be a part of your life wherein आपको फील हो रहा है कि मैं नॉर्मल रेगुलर ही तो खा रही हूँ. एंड अगर आप कहीं पे भी जा रही हो, यू कैन एंजॉय एवरी सिंगल फूड दैट इज प्रेजेंट. एंजॉय एवरी सिंगल फेस्टिवल, एंजॉय एवरी फूड. और कुछ ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्टिव है कि हम कुछ अलग ही कर रहे हैं, वैसा नहीं है. फैमिली में बैठ के आराम से जो वो खा रहे हैं वो खाना है, विथ सम स्लाइट मॉडिफिकेशन. जो वो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है, वही हम लोग आपको सिखाने वाले हैं.
तो डेफिनेटली वर्किंग वुमेन के लिए अप्रोप्रिएट है. एंड समवन हु डोंट कुक मच और डजंट इवन नो हाउ टू कुकिंग, बस प्रेशर कुकर में अगर सीटी मारना भी आता है, बॉईल करना आता है, दैट्स एनफ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. दैट्स एनफ. Absolutely. Thank you, Adrija. Sharon, I hope we've answered your question, and you don't have to cook much. And we ensure that जो खाना आपके घर में पक रहा है उसके हिसाब से हम उसको उसके साइकिल में डाल के, and in fact when you start eating healthy your entire family tends to eat healthy. That's what I tell everyone कि इससे आपकी पूरी फैमिली का फायदा हो जाता है. Congratulations, Sharon. So you please go ahead and enroll. She's saying I'm enrolling now. So let's have a round of Yes. applause for Sharon for taking that step towards a better and healthier menstrual lifestyle. Lovely, lovely. Love your enthusiasm, Sharon. And अगर किसी के कुछ भी questions है ना, please, please, वो अपने पास मत रखिए, मुझे बताइए. If you feel that, oh, this, it's too much for me to, it's 7,800 rupees for 3 months. I will exactly tell you the calculation. And like I said, you get a doctor, a dietitian, uh, a fitness regime, and a health coach, right? All of this in one platform. 7,800. वो लगता है ऐसे कि वो इतना सारा अमाउंट है, आपको एक साथ नहीं पे करना है. 2,600 rupees is what is the monthly cost of this program, right? It's essentially 80 rupees per day, right? Adrija, 1 किलो दूध का पैकेट का क्या प्राइस है आजकल? देखिए, मैं जो अमूल का अगर मैं छोटे पैकेट की बात करूं, वो 27 रुपए का आता है टोन. और फुल क्रीम अगर बात करें तो फॉर 32 रुपीज का आ जाता है हाफ किलो, हाफ लीटर वाला जो होता है. Right. एंड So, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू 2 टेल लीटर कि दूध द के पैकेट. बेस्ट पार्ट इज कि वी यू विल गेट एवरीबडी इन योर, जो हम पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं इवन विद द यूजर, वेर इन डॉक्टर्स भी हैं, डाइटिशियन भी है, हेल्थ कोच भी है, एंड यू आर आस्किंग योर क्वेश्चन एंड देन एंड देयर डॉक्टर एंड डाइटिशियन आर देयर टू आंसर यू. मतलब आपका पर्सनल डाइटिशियन आपको डॉक्टर एक्चुअली तो है ही. स्क्रीनशॉट्स दिखाने चाहिए कि Yes, कैसे and we करते have those हैं. group, like personal I group think we have that. that, yeah. We Hmm. have these personal groups where, people have to, you see this? People actually go in the WhatsApp group and they chat with our doctors. Yes, You can actually, ask for an appointment. Let's go back, and lot of people want to pay. You need to pay yes. only 1,000 rupees to block your seats, Mandy. Vandy Singh. Vandy, what's your real name? Vandy Singh is. You need to pay only 1,000 rupees. Disha Nagar says, I have paid. Let's have a round of Disha. Round of applause for Disha. Congratulations, Disha. Shiza says, I want to join. Shiza, you just need to scan the QR code and pay 1,000 rupees to block your seats. That's it. How will the period come early in this? No, Asta, what is your issue? Can you tell me? Period will not come early. Period will come on its time. If you have irregular periods, we will ensure that within a span of 3 months, we regularize your period. We will ensure that. So, but depending on what your condition is, Asta. So, you just need to scan this QR code. And if you have more questions, Asta, you can comment in the box, or you can send us your query to the panelist separately, and we can take the questions and try to understand what your issues are. So all of those who are asking me how to join, so many people are asking me, Adrija, you need to scan this QR code and just pay 1,000 rupees to block your seats. That's all I'm saying. Just 1,000 rupees. Right? And for all those people who are thinking ये 3 months का क्यों है, और अगर मुझे कोई रिजल्ट आया नहीं तो मैं क्या करूंगी, I have a special surprise for all of you who are there in this workshop. I am offering you a 15 days money back guarantee, which essentially means that अगर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आया 15 दिन में, you feel that you don't see an iota of change, कि कोई भी चेंज नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है, you get your money back. I will not even ask you a single question. No questions asked. You get your money back within 15 days of this program. और मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ये क्योंकि I want more and more people to join. I'm doing this
because I feel your pain. I understand that you must have tried a lot of things, but it tends to happen that things don't work out for you. So we created this 15 days money back guarantee, which is a challenge from me to you, saying that if it doesn't work out, you get your money back. And that's the promise Laiqa gives you. So that's about our 3 months program, which is at a special discount, 35% discount, where you need to pay only 1,000 rupees to block your seats today, which is valid only in this workshop. इस workshop के बाद अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे ये same discount चाहिए, sorry मैं नहीं दे पाऊंगी. The price remains at 12,000 rupees, but it's only for people. And I would like to, just congratulate all of you, firstly, for coming and joining this workshop. Let's have a round of applause for people who have taken that step to join this workshop और जो इतनी patiently हमें सुन रहे हैं. और ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया. अगर आप ये लोग सोच रहे हो ना कि दिवाली टाइम है, आप दिवाली के बाद भी शुरुआत शुरू कर सकते हो, बट ये प्राइस में आपको, ये दिवाली डिस्काउंट ही चल रहा है, ये प्राइस में आपको बार बार नहीं दे पाऊंगी. एंड दिवाली की खत्म होने के एकदम बाद हम एक दिवाली डिटॉक्स कर रहे हैं, बिकॉज दिवाली में आप इंडल्ज करोगे, you'll have a lot of sweets, you'll probably some women also, we tend to indulge in alcohol and बहुत खाते पीते हैं हम लोग. So we have a Diwali detox workshop this Sunday at 12 p.m. where we will teach you why detox is important when you actually indulge in such high calorie food. How is that you should be detoxing yourself? And this hormonal balance builder program, you can start just after Diwali, which is 5th of November when we are starting this program. It's a challenge for all of you for 3 months. And we start with a post Diwali detox. So that's the fun side of it. Let's go back to see how many of you are interested again in this program. अगर किसी को भी ये लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मुझे ये भी बता दो, मैं तो आपको जवाब दे पाऊंगी कि क्यों इसका प्राइस इतना है, अगर किसी को लग रहा है ये. And if you think that you want to enroll for a 1 month program, I also have that. But mind you, 3 months is what you will take if you have PCOS, thyroid or irregular periods. इतना टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा अपनी कंडीशन को रिवर्स करने में. But if at all you want me to guide you, saying you want to go for a lower duration program, 1 month program, I can give you that option. But I want to hear it from the audience, from all of you. Jyoti, Deepika, Kavita, Megha, Sharon has already enrolled with us. Shilpi, Vandy has already enrolled. Congratulations, first of all, all of you. Astha, if you have any questions, you may ask us. And we're going to be there for only 2 more minutes to see if there are any questions. And with that, we will have to, this price will be valid only in this workshop. Like I'm repeating again and again. So let's be in charge of our health, girls. Let's take advantage of this program and let's rebuild our health. आई थिंक अदिता, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हम एक टॉपिक कवर नहीं कर पाए आज, which was a lot of women have hair fall and hair issues. So do you think that could be because of their hormones acting up? डेफिनेटली हेयर फॉल इज अ कंडीशन, जैसे कि पीसीओएस एंड पीसीओडी की अगर मैं बात करूं, तो आपके बॉडी में जैसे ही आपका ईस्ट्रोजन लेवल, बिकॉज ईस्ट्रोजन इज समथिंग विच इज ब्लेस्ड टू गिव यू लाइक हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन, अगर आपका प्रॉपरली, एंड वेर इन अगर आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल कम है एंड यू हैव द मेल हॉर्मोन्स, एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन हाई इन योर बॉडी, हेयर फॉल आपका होना बहुत ही कॉमन हो जाता है. इट्स बिकम अ सिम्टम. एक्चुअली हेयर फॉल इज अ सिम्टम ऑफ पीसीओएस. एंड ऑल्सो यू माइट सी अ different pattern of hair fall wherein you see the male pattern balding. ये आपके साइड से हेयर लाइंस आपको दिखना शुरू हो जाता है. तो हार्मोन एक फैक्टर डेफिनेटली है. उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, अगेन लाइक डाइट इज डेफिनेटली अ वेरी मेजर रोल
अगर मैं हेयर हेल्थ की बात करूं तो आप सीड्स नट्स एंड अगर आपके डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इफ यू आर नॉट टेकिंग योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली, स्पेशली द बी विटामिन्स एंड द जिंक, तो आपके हेयर फॉल, हेयर क्वालिटी, इवन नॉट द हेयर फॉल भी अगर नहीं है तो हेयर की क्वालिटी, जो शाइन होनी चाहिए, जो बाउंस होना चाहिए, वो मिसिंग हो जाएगा अगर आपका डाइट प्रॉपर्ली, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ hormonal imbalance, whether in case of thyroid also, hair fall is a symptom of thyroid as well, तो वहां पे भी आपको दिखेगा. Absolutely. Thank you for answering this, Trija. I think we have taken a lot of questions from the audience, and this is the last 1 minute that we're going to keep the screen on. And with that, I would like to take everybody's leave. I would still like to take names for people who might have questions. Megha, Raman, Shilpi, Jyoti, if you have any questions for us, please shoot and take charge of your health. And if you have any issues regarding your hormonal health, ensure that you're taking charge of your health and doing something towards it through a Yes. very natural and holistic way. That's the way to go about it, and medication is not. So Yes, and सिर्फ अगर ऐसा भी नहीं कि hormonal imbalance है, if you are facing particular problem wherein your weight is stuck, you are not able to lose your weight, even अगर आपका gut सही नहीं है, we are here to help you, राइट. तो रूट कॉज एनालाइज करके समझना कि क्यों हो रहा है, एंड देन ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ एवरीथिंग नेचुरल, वेदर इट्स योर डाइट और द होम रेमेडीज, आयुर्वेदिक रेमेडीज, वी आर देयर टू हेल्प यू ऑल. absolutely, absolutely. So Adrija, with that, let's say, um, namaste to all of you, and it's good evening. It's 5:30, 5:20. With that, I'd like to take your leave, and thank you for attending this session. It was really nice to have such a lovely audience. And if you have any questions, you could book a free consultation with us. I'm sharing my number. And we are keeping this offer on for the next 1 hour for all those people who attended this workshop. This offer is valid only for the next 1 hour. You can reach out to my team and avail this offer. And if you have any questions, please go ahead and ask them. That's my number. And in case I typed it wrong, it's 899964235 in case you'd like to speak to me in person or you have any queries and questions, please uh, डोंट रेजिस्ट टू मैसेज मी. मेरे को मैसेज करिए, कॉल करिए, जैसे भी आपको आपको अच्छा लगता है. I will try to address your concerns as far as possible. With that, I'd like to take your leave. I'm Anjali Thakur and from Laiqa, and wish you a very healthy and happy menstrual health. Thank you so much.